Assalamualaikum. आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर थ्योरम का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। हम देखेंगे किस तरह से हम किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर चेक कर सकते हैं using this simple yet powerful theorem. फैक्टर थ्योरम मैथमेटिक्स का एक कोर टॉपिक है जो आपको algebraic equations सॉल्व करने में मदद देता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं। Let's dive into it. Theorem. Factor theorem ये कहता है कि अगर हम first polynomial को second polynomial में put करें और answer 0 आए तो इसका मतलब है first polynomial second का factor है। आज हमने देखना है कैसे check करते हैं कि एक polynomial दूसरे polynomial का factor है या नहीं using the factor theorem. So let's start. What's the question? Main two चीजें दी गई हैं. First polynomial x minus 1, second polynomial x square, plus 4x minus 5. हमें check करना है कि जो first polynomial है क्या वो second polynomial का factor है. What is the factor theorem? Factor theorem ये कहता है कि अगर हम first polynomial को second polynomial में put करें और answer 0 आए तो इसका मतलब है first polynomial second का factor है. Apply the factor theorem. हमारे पास first polynomial x minus 1 है and second polynomial x square plus 4x minus 5 है जो highest degree polynomial होगी. उसको suppose करेंगे f of x and put the linear polynomial equal to 0. हम इसको equal to 0 करके x की value find कर लेते हैं. x minus 1 equals 0, then x is equal to 1 आएगा. Substitute the value of x equal to 1 in the second polynomial. अब हम x equals 1 को second polynomial में put करेंगे. Second polynomial क्या था? Yeah, f of x equals x squared plus 4x minus 5. अब हम is main x equal 1 put करते हैं. f of 1 equals 1 squared plus 4. Into 1 minus 5 first, 1, 2 equals 1, 1, 2 equals 1 second, 4, 1 equal to 4, 4, 1 equals 4. So now calculate f of 1 equal to 5 minus 5 which is 0. Conclusion कि जब हमने x equal to 1 को polynomial में put किया तो answer 0 आया. इसका मतलब है कि yes, x minus 1 is a factor of x squared plus 4 minus 5. Let's see question number 6. What's the question? Main two चीजें दी गई हैं. First polynomial x minus 2. Second polynomial x cube plus x square minus 7x plus 1. हमें check करना है कि जो first polynomial है क्या वो second polynomial का factor है. What is the factor theorem? Factor theorem ये कहता है कि अगर हम first polynomial को second polynomial में put करें or answer 0 आए तो इसका मतलब है first polynomial second का factor है. Apply the factor theorem. हमारे पास first polynomial x minus 2 and second polynomial x cube plus x square minus 7x plus 1 जो highest degree polynomial होगी. उसको suppose करेंगे f of x and put the linear polynomial equal to 0. हम इसको equal to 0 करके x की value find कर लेते हैं. x minus 2 equals 0. Then x is equal to 2 आएगा. Substitute the value of x equals 2 in the second polynomial. अब हम x equals 2 को second polynomial में put करेंगे. Second polynomial क्या था? f of equals x cubed plus x square minus 7x plus 1. हम is my x equals 2 put करते हैं. f of 1 equal 2 cubed plus 2 square minus 7 into 2 plus 1. First 2 cube is equal to 8. Second 2 square is equal to 4. So now calculate f of 2 is equal to minus 1 which is not equal to 0. Conclusion क्योंकि जब हमने x21 को polynomial में put किया तो answer 0 नहीं आया. इसका मतलब है कि no, x minus 2 is not a factor of x cube plus x square minus 7x plus 1. Let's see question number 7. What's the question? Main two चीजें दी गई हैं. First polynomial omega plus 2.
second polynomial, 2 omega cubed plus omega square minus 4 omega. Plus 7. Hamin check karna hai ki jo first polynomial hai. Kya wo? Second polynomial ka factor hai. Using factor theorem to solve it. Factor theorem. Ye kehta hai ke kar first polynomial ko second polynomial mein put karein. Or answer 0 I. To iska matlab hai first polynomial second ka factor hai. Humare paas first polynomial omega plus 2 hai. And second polynomial 2 omega cube plus omega square minus 4 omega plus 7. Hai. Jo highest degree polynomial hogi usko. Suppose kari de f of omega. Because yaha variable diege hai agar x variable hoga. To x use kari g agar omega hai to omega use kri ge. And put the linear polynomial equal to 0. Hum isko equal to 0 kar k. Omega, key value find kar lati hain. Omega. Plus 2 equals 0. Then omega is equal to minus 2 ega. Substitute the value of omega equals 2 in the second polynomial. Ab hum omega equals 2 ko second polynomial mai put karenge second polynomial kida. Yet f of omega equals 2 omega cube. Plus omega square minus 4 omega plus 7. Abum is my, omega equals 2, put kurti hain. F of 2 equals 2 into minus 2 cube, plus minus 2 square, minus 4 into minus 2, plus 7. First, minus 2 cube is equal to minus 8. Second, minus 2 square is equal to 4. So now calculate f of 2 is equal to 3, which is not equal to 0. Conclusion. Kinke jab humne. Omega is equal to minus 2 go polynomial main put kia. To answer 0 ni aya, iska matlab hai ke no. Omega plus 2 is not a factor of 2 omega cube plus omega square minus 4 omega plus 7. Let's see question number 8. What's the question? We have to give in two things. First polynomial, x minus a. Second polynomial, x power n minus a power n. Hamin check karna hai. Ki jo first polynomial hai. Kya wo? Second polynomial ka factor hai. Using factor theorem. Ye kita hai ke? Agar hum. First polynomial ko. Second polynomial mai. Put karain. Or answer 0 I. To iska matlab hai. First polynomial, second k factor hai. Apply the factor theorem. Humare paas first polynomial x minus a hai. And second polynomial x power n minus a power n. Jo highest degree. Polynomial hoji, usko, suppose kari ge f of x but the linear polynomial equal to 0. Hum isko equal to 0 karke. X chi value find kar lady hain, x minus a equal to 0. Then x is equal to a gia. Substitute the value of x equal to a in the second polynomial. Abhum x is equal to a cosecond polynomial mai put karing gay. Second polynomial kiaba. Yeah f of x power n. Minus a power n. Abhum is my put kirkerti hain. F of a equal a power n. Minus a power n. That is equal to 0. Conclusion hinki jabhum mi x minus. A co polynomial mean put kia. To answer 0 aya, iska matlab hai ki x minus a is a factor of x power n minus a power n. Let's see question number 9. What's the question? We have to give in two things. First polynomial x plus a, second polynomial x power n plus a power n. In given condition, n is odd integer. Hamin check karna hai, ki jo first polynomial hai. Tia wo. Second polynomial ka factor hai. Using factor theorem. Ye keta hai ke. Agar hum first polynomial ko. Second polynomial mai put karain. Or answer 0 I. To iska matlab a first polynomial. Second ka factor hai. Apply the factor theorem. Humari pas first polynomial. X plus a. And second polynomial. X power n. Plus a power n. In jo highest degree. Polynomial hoji, usko suppose kari ge f of x, put the linear polynomial equal to 0. Hamisko equal to 0 karke. X key value find kar lady hain. X plus a equals 0.
then x is equal to minus a da. Substitute the value of x equals minus a in the second polynomial. A boom, x is equal to minus a ko second polynomial mai, put kरेंगे second polynomial kila ye f of x equals x power n, plus a power n. A boom is my, x e minus a, put करती हैं, f of a equal minus a power n plus a power n because n is odd. So minus a की जितनी b powers lie j will minus my ही ku k, n odd है, that's equal to 0. Conclusion क्योंकि जब हमने x plus a को polynomial में put किया तो answer 0 आया इसका मतलब है x plus a is a factor of x power n plus a power n. Let's see question number 10. X power 4 plus 2x cubed plus kx square plus 3 ko x minus 2 si divide किया जाता है तो remainder 1 होती है k की value find करें. 1 question को understand करें हमें एक polynomial दिया गया है x4 plus 2x cubed plus kx square plus 3 यह polynomial x minus 2c divide हो रहा है question में बताया गया है कि remainder 1 है k की value find करनी है जो कि एक unknown number है. Using remainder theorem, remainder का मतलब होता है polynomial का value जब x equals a put किया जाता है, so इस case में divisor x minus 2 है. x equals 2 को polynomial में put करेंगे एक function की तरह लिखती हैं f of x equals x4 plus 2x cube plus kx square plus 3. यह polynomial का equation है x2 को polynomial में put करना. Substitute x2 into the polynomial. f of 2 equals 2 power 4 plus 2 into 2 cubed plus k2 square. Terms को simplify करना. R3 को n में add करेंगे. Use the remainder information. Question में given है कि remainder 1 है जब divide किया गया x minus 2 से. f of 2 equals 1 है. अब हम equation को 1 की equal करेंगे. 35 plus 4k equals 1. अब हम k की value find करेंगे. पहले 35 को side से minus cut in 4k equal 1 minus 35, 4k minus 34. Ab 4c divide करें k equals minus 34. Divided by 4, after cutting you will get value of k is minus 17 by 2. Let's see question number 11. X power 3, 2x square plus kx plus 4 ko x minus 2 sy. Divide किया जाता है तो remainder 14 आता है. k की value find करनी है. Question को understand करें. हमें एक polynomial दिया गया है. x power 3 plus 2x square plus kx plus 4. यह polynomial x minus 2 से divide हो रहा है. Question में बताया गया है कि remainder 14 है. My k की value find करनी है जो कि एक unknown number है. Polynomial एक function की तरह लिखती हैं. f of x equals x power 3 plus 2x square kx plus 4. यह polynomial का equation है x equals 2 को. Polynomial mean put substitute x equals 2 into the polynomial. f of 2 equals 2 cubed plus 2 into 2 square plus 2k plus 4. After simplifying we get equation 2. Use the remainder information. Question में given है कि remainder 14 है जब divide किया गया x minus 2 psi. इसका मतलब है f of 2 equals of 14. अब हम equation को 14 की equal करें 20 plus 2k equals of 14. अब हम k की value find करेंगे. पहले 20 को opposite side से minus करते हैं. 2k is equal to 14 minus 20. 2k equal minus 6. Am 2. So I divide करेंगे. K equal to minus 3. You will get value of k is minus 3. अगर आपको ये explanation समझ आ गई है और आपको video helpful लगी तो please like जरूर करें. अगर आपको कोई question या confusion है तो comments में पूछ सकते हैं.
I will try to answer you. और अगर आप ऐसी और helpful videos देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो आपको मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. Thank you for watching. मिलता है अगले वीडियो में. Take care and Allah Hafiz.